नमस्कार मु डॉक्टर संजुक्ता पंडा लेक्चरर भावे कलिंगा इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंटल साइंसेस रे कार्यरत आज आपण मान सांगरे मु ओरल हेल्थ केयर विषय रे कथा हवा पई आसीची। साधारण आपण जानिथिबे आमर दी प्रकार दांत हुए, गोटे क्षीर दांत गोटे स्थायी दांत। क्षीर दांत होउची 20टा दांत, स्थायी दांत 32टा दांत। आमर बॉडी ओरल कैविटी रे गोटे होउची सॉफ्ट टिश्यूज गोटे हार्ड टिश्यूज होउची ना। दांतर भल भाव रे गोटे छुआ जन्म नौची, माँ जेबे जन्म दिए माँ क्षीर सी खाए। साधारण से समय माँ माने जानतीनी कि छुआ मान पाटीटा को भलरे परिष्कार और सफा करिया कथा। क्षीर खुएला परे माँ मानकू सान छुआ जो न्यूबॉर्न बेबीज हुअंती तांको पाटी को गोटे स्टेरिलाइज्ड गॉज किंबा छोटो गोटे साधारण हैंकरचिफ हम कि कोडे कना नहीं कि जोटा स्टेरिलाइज थेबो सेटारे पाटी पोछिकी परिष्कार करिकी रखिबे। सान छुआ माने जेबे तांकर दांत उठे सेटा होची 6 मास ठू 7 मास भितरे नुआ दांत तल दांत उठे। तापरे आपणकर 2 वर्ष पर्यंत क्षीर दांत मिल्क टूथ आपणकर उठुची। जेबे दांतटा नुआ दांत जे क्षीर दांतटा उठे से समठू माँ माने जो क्षीर सान छुआ माने क्षीर खाउतबे से मान तो जेहेतु तांको दांतटा तो परिष्कार करि परिबे ने, एडे मदर्स रोल बहुत इंपोर्टेंट हो जाए। से माने से क्षीर दांत को भलरे परिष्कार करिकी रखिबे। किमिति परिष्कार करिबे ना, सान छुआ माने नुआ नुआ दांत उठिची कोन से माने ब्रश करि परिबे नाही आज्ञा, आपण ब्रश करिबे नाही। सेडा सान छुआ माने गोटे कना नेबे जोटा भलरे स्टेरिलाइज्ड फुटा पानी रे भलरे फुटेकी ताकू सुखै देबे। खरारे खरा होची यूवी लाइट जिमती काम दिए, खरारे रखिथिबे ताकू स्टेरिलाइज करिकी अलगा रखिए पाटीटा पोछि देबे। सान छुआ माने अगेन आपन को जानी थिबे से माने जो फूड खाती सेटारे शुगर बेसी रुहे। शुगर सबुठु बेसी आमर दांतरे पोको काटे। साधारण लैंग्वेज रे हमें पोको काटिया को कहूचु, बट सेटार कोन हुए पाटी रे जेबे शुगर बेसी रहउची बैक्टीरिया बेसी रहउची पाटी रे सेटा तार गोटे कॉलोनी हो जाए। कॉलोनी लगी सान छुआ मान रहे आपन देखिबे छोट छोट नुआ क्षीर दांत हेइथिबो। केते पेशेंट आसंती कहंती आगे छोट छोट दांत रे कोन टिके पोको काटी देइची, इमिति काहे की हेइची। एडारे रोल मदर मान रो होची। मदर माने क्षीर खुया परे बेबी फूड देला परे जोडारे शुगर आइटम बेसी रहउची पाटी को भलरे परिष्कार करिकी रखिबे, सेटा मदर्स रोल। 2 वर्ष समय जेबे छुआटा टिके ठिया हे जिवो निजर निजे ब्रश करि पारिबो, छुआ मान माँ माने निजे ठिया हेकी तांको ब्रश करेबा कथा। एबे आमे जानिबा साधारण आमे जेबे ब्रश केते थर करिया कथा। लोक माने कहंती आमे थरटे सकाळु उठिलु ब्रश करिदेलु, नाही आज्ञा, दिनुको मिनिमम आमे 2 थर ब्रश करिया निहाती दरकार। सकाळ आमे उठिलु उठिकी ब्रश करिबा, सोइबा पूर्व आमे जेहेतु समस्ते अलसुआ हे जाऊ राति रे सोइबा पूर्व ब्रश करूनु। राति रे ब्रश करिया निहाती दरकार, कारण होउची न आमे ब्रश करले हमर सलाइवा जो छेपटा होउची राति रे कमी जाए और से समय हम जीवाणुटा बेसी रहइबो। खाद्य जिंस रही गले जीवाणु जाको सेइडे तां कॉलोनी करिकी हमर एनामल जो रहउची दांतर सेडारे ताकू नष्ट करिवे। डीमिनरलाइजेशन हमर टेक्निकल टर्म रे हुए, बट नॉर्मली लेमैन हमर साधारण लैंग्वेज रे पोको काटी जाए। सेथि पई 2 थर आमे निश्चित ब्रश करिवो। द्वितीय जिंस होउची ब्रश। 3 प्रकार आम गुड़ाई ब्रश आमर कमर्शियली बहुत एवेलेबल अच्छी। सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश, हार्ड ब्रश रोची। आज्ञा आमे मैक्सिमम समस्या से ओवर द काउंटर किए अच्छे सान छुआ मैंने हेले कहते एकदम सॉफ्ट ब्रश नाई, मीडियम ब्रश आप यूज करें। मीडियम ब्रश यूज करेंगे आ दांत टिके 2 थर भलरे माढ़ी रे घूरे कि भलरे आप ब्रश करेंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम आपन को गोटे वीडियो हेले देखैबी जोड़ारे आपन जानी पारिबे केमिति आपन ब्रश करि पारिबे ना। को टूथपेस्ट गुड़ाई टूथपेस्ट एवेलेबल अच्छी, को टूथपेस्ट आपन यूज करिया कथा। फ्लोरिडेटेड अच्छी, आयुर्वेदिक अच्छी, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट हेले अच्छी। आज्ञा सबुठु बेस्ट होउची फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट बिकॉज सेडारे एंटी कैरियोजेनिक अच्छी, दांत जे पोको काटिबो नाही। अन्य जिंस होउची आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक हेले आमे यूज करि पारिबु, किछि असुविधा नाही, प्रोवाइडेड आमे थारो भलरे ब्रश करिबु। आ डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट जोडा अच्छी दांत सिरसिर हे जाए। आमर दांतर 3टा लेयर होची, ऊपर धला लेयर आ गोटे येलोइश डेंटिन। जो समय दांत घोरी हो जाए जो सेंसिटिविटी बेसी हुए से समय आमे डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज करिया कथा।
पार्टीटा आम सब मन रखिए कि भलरे कुली करेंगे भलरे कुली करें का आपणकर पार्टी भलरे रहिबो सब आपण जानी थे गाँ गहली रे आमर घरे द्वार रोची द्वार रे आमर गोबर लिपिकी आमे गोटे एरुंडी रे सेडे आमे सुंदर रे रंगोली करचु भलरे द्वार बंध लगाउचु कहीं आमे गोबर लिपुतुलु ना एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रहइबो घर भितर जिमती जीव नाही सेमिति आमर पार्टी होची गेटवे आमर पार्टीटा भल रहिले आमर शरीर भल रहिबो सेमिति आमे आमर निज पार्टीटा को एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट सेति पई भलरे कुली करिवे माउथ वॉश आपण यूज करि परिबे डाक्टर जो दांत डाक्टर जो प्रकार कहिथिबो से अनुसार आपण दांत डाक्टर जिमती कहिथिबे माउथ वॉश यूज करिवे किंबा आमर घर जहाँ अच्छी लुण पानी कुली हेले करि परिबे सेटारे कोन हबो आपण को एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रहिबो साधारण आपण जानिबे किमती को समय रे आपण दांत डाक्टर पाखरे आसिया कथा 6 मास को थरे दांत डाक्टर पाखरे जिमिति हेले गोटे विजिट करिवे दांत रे टिके कला हे जाइथिबो मु आपनको गोटे छोटो स्लाइड देखौची जोडे जानि परिबे कि किमती कैविटी हुए गोटे डेंटल केरीज रो कैविटी कला कला दाग गोटे देखिबे बाय चांस आपण देखिले कला दाग हेइची सेटा जाइकी दांत डाक्टर पाखरे जिबे दांत डाक्टर जाइकी ताकू रेस्टोरेशन करिवे फिलिंग करिवे हमरो एबे चिकित्सा बहुत हाई क्वालिटी रे हे जाइची भलरे तारो फिलिंग हेले करि परिबे मु आपनको सानो छुआ मान रो हेले देखौची जोड़े सान छुआ मान हेले चिकित्सा हुए बड़ पिला मान हेले दांतर जो कैविटी रोची भल भाव में आमे ताकू फिलिंग करि पारुची नेक्स्ट मु आपन आ गोटे स्लाइड देखौची एडा होची आपन दांत भलरे ब्रश न करिले आपन देखि पारिबे कि तळे गोटे गोटे पूरा सीमेंट जिमती गोटे जिंस हे जाइची एडा होची आपनकर पूरा बैक्टीरियल कॉलोनी जिमती आपनकर रही जाए ए बैक्टीरियल कॉलोनीटा भल नुह कौन पाई भल नाही एक बैक्टीरिया कॉलोनी रहिले जो प्लाग कहउचंती आमर टेक्निकल टर्म रे एटा आमर पार्टी रे हेले आमर ब्लड सर्कुलेशन रोची से ब्लड सर्कुलेशन आज्ञा कोडे जीवो ना आमर हार्ट रे जीवो एबे आमर रिसर्च हेले कहउची पार्टीटा एबे भलरे न रखिले आपनको हार्ट रे हेले जे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस हेई पारे द्वितीय जिंस आपण बहुत लाइफस्टाइल गोटे डिसऑर्डर आपण जानि थिबे आपण शुगर शुगर गोटे बहुत कॉमन डिजीज आजिकाली समस्त को होची ना ता लगी हेले दांतर बहुत रोग हुए को दांत रोग हुए आज्ञा आपणकर पायरिया रोग साधारण लैंग्वेज रे आमे पायरिया रोग कहूचु ना पायरिया रोग कौन हुए ना शुगर जेबे हुए डायबिटीज जेबे आमर होउची आमर श्वेत रक्त जो हुए दैट इज आमर WBC जो होउची तारो न्यूट्रोफिल्स गोटे सेटा श्वेत रक्त रे न्यूट्रोफिल्स होउची तारो जो डिफेंस मेकानिज्म ता कमी जाए जेहेतु सेटा कमी जाए तो आमर माढ़ीर रोग बढ़ी जाए सेतपे आमे आमर स्वतंत्र गोटे पेरियोडोंटिक डिपार्टमेंट अच्छी जोड़े आपण जाइकी दांत पूरा परिष्कार परीक्षण करिकी रखिले आपणकर बॉडी हेले भल रहिबो नेक्स्ट स्लाइड गोटे आ गोटे देखौची आपनको जो दांत रे आमे ब्रश करिया समय रे केबे आपण देखि पारिबे कि सेडारे ब्लीडिंग होउची ब्लीडिंग जेबे होउची सेटा कोन पय आपण भलरे ब्रश करिबे नाही ओडिसा रे आ गोटे जिंस आपण देखि पारिबे कि हमर तांबूल पत्र बहुत अच्छी लोक माने पान खांती बहुत पानरे पान खाइले आज्ञा किसी असुविधा नहीं तांबूल पत्र इज वेरी गुड आयुर्वेदिक डाइजेशन पाई बट तांबूल पत्र रे आमे कोन पकाउचु ना सेडारे हम तंबाकू टोबैको यूज करचु टोबैको जेहेतु यूज करूचु सेडा कोन हुए कर्कट रोग हुए आज्ञा सेडा बेसी खाइले हमर पार्टी रे कर्कट रोग हवा पाई चांसेस हुए सेति खाली तांबूल पत्र इज नॉट हार्मफुल बट तांबूल पत्र सांगरे आपण जो आमे जर्दा खाउचु सेडा हार्मफुल सेतपे आमे दांत डाक्टर पाखरे रेगुलर चेकअप करूथुबु जिमती हमरो कलिंगा इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंटल साइंसेस ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट अछि सेडे आपण जिबे डायग्नोस्टिक रे से माने आपण को देखि परिबे पाटरे पार्टी रे किछि आपण को धळा दाग तो नाही कि आपण नाली दाग तो नाही किछि थिबो तो इन ऑन टाइम आपण को प्रिवेंशन हे जिवो कर्कट रोग तो हबो नाही से प्रिवेंशन हे जिवो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आ गोटे जिनस जानिबे 17-18 वर्षर छुआ माने आसंती ज्ञान दांत से समय उठे ज्ञान दांत जेबे उठे दांत बहुत केबे आजिकल इवोल्यूशन हो जाए तो ज्ञान समस्त 32 दांत आसेनी तो गोटे इम्पैक्टेड दांत हो जाए सेटा आमर मैक्सिलोफेशियल ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट अच्छी जोड़े सर्जन माने ताकू काढ़ी दियंती तो पेशेंट मानू कष्ट हुए नाही कष्ट आपण देखिबे कौन कष्ट हुए ना गोटे माढ़ीर जो छोट मु आपन को स्लाइड रे ले देखेउची गोटे पेरिकोरोनल फ्लैप हुए सेटा आमे एक्सरसाइज करिकी काढ़ी दबु दिस इज माने एटा होची आपनकर दांतर किमती केयर नेबे द्वितीय जिंस
आमर जमती बुढ़ा लोक हेबा स्टार्ट होचंती से माने कोन केयर नेले आपण बयस जमती जमती बढ़िबो आपण 32टा दांत भलरे रहिबो। सान छुआ माने माँ माने ताकर दांत देखिया स्टार्ट करिवे माने पिला आलु दांत देखिया स्टार्ट करिवे तो बुढ़ा वर्ष पर्यंत आपण दांतटा रहिबो। बाय चांस आपण दांतरे पोक काटी देइची आमे कौन करवा तार कौन चिकित्सा अच्छी कि आपण मनरे प्रश्न आसुथुबो आज्ञा हाँ अच्छी। आग फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन सब बड़े आपण चेष्टा करिवे कि आमे प्रिवेंट करिवु जस्ट छोटो गोटे कैविटी हेइथिबो ताको फिलिंग कर देबे आपणकर गोटे बर्डन हबनी ना आपनको कष्ट हबनी फाइनेंशियल बर्डन हबनी ना शारीरिक पीड़ा हेले हबनी। बट हाँ बाय चांस आमे टिके अवहेला करिकी रही गलु तो कौन करबा आगे कौन ट्रीटमेंट अच्छी गोटे आमर रूट केनाल ट्रीटमेंट जोड़ा आमर गोटे एंडोडोंटिक्स स्वतंत्र गोटे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट अच्छी सेटे से माने दांतर मंज को काढ़ी सेटा फिलिंग करिकी करंती आपणकर दांत से जगार रहिबो आपण आराम रे खाई परिबे किछि असुविधा हब नाही। आ तापरे गोटे तापरे कैप लगा हुए जो प्रोस्थेटिक आमे कहूचु प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट गोटे अच्छी सेरारे आमे दांत आपणकर लगेकी देबु आपणकर नेचुरल टीथ जिमती रहइबो आपण किछि असुविधा हब नाही। बट गोटे जिनस मु आपनको जणैया पई चाहिबी आपण जेते नेचुरल टूथ रखिबे सेते आपण पई भलो। प्रोस्थेसिस इज प्रोस्थेसिस बट आमे दांत डाक्टर हिसाब रे आपण पई सब बळे अछु वी आर एट योर सर्विस आपण किछि असुविधा नै हमर एबे गुडा एमे टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो जाइछि किछि असुविधा नै कोनोसी प्रॉब्लम थिबो आमे इमिडिएटली रेक्टिफाई करूछु। आ गोटे जिनस मु आपण संगे शेयर करिया पई चाहूची सानो छुआ माने जस्ट न्यूली साइकिल चलाउछन्ती समस्ते हठात एक्सीडेंट हे गेला पिला मानर दांत भांगी जाइछि यूजुअली माँ माने कोन करे आज्ञा क्षीर तो दांत अच्छी कि से माने जानी पारंतिनी कि को दांतटा सेटा 7 वर्ष रे परमानेंट दांतटा पळे आसे तो कौन करवा दांत भांगी जाइछि दांत भांगी गले आमर स्वतंत्र गोटे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट अच्छी सेडे आसिकी तांकर दांतर ट्रीटमेंट करि पारिबे। सानो छुआ मान हेले रूट केनाल ट्रीटमेंट हुए तांकर हेले कैप लगा जाए ना समझ। अनदर क्वेश्चन आपनको मनरे आसुथुबो क्षीर दांत सान जेते आसुचंती क्षीर दांत कौन पई रखिया पई इंपोर्टेंट ना क्षीर दांत रहिले क्षीर दांत जेमती बापा जेमती क्षीर दांत होची पुओ परमानेंट टूथ गोटे गाइडेंस अच्छी माने तो ऊपर जमती आपणकर क्षीर दांत अच्छी ताको गोटे गाइडेंस दरकार परमानेंट टूथटा ऊपर को उठिया पई आमे क्षीर दांतटा काढी देलु क्षीर दांतटा काढी देलु किए कहबे आगे दरकार नै क्षीर दांत अच्छी आमर परमानेंट टूथ आसीबो। बट परमानेंट टूथ रो गोटे समय अच्छी सबु जिनसर गोटे समय अच्छी इरप्शन रे दांत गोटे इरप्ट हवा पई तार गोटे पर्टिकुलर टाइम अच्छी तो से टाइम पर्यंत से क्षीर दांतटा दरकार सेति पई क्षीर दांत रे हेले पोक काटिले ताकू इंपोर्टेंट अच्छी बाय चांस बेसी डीप हे जाइछि ताकू रूट केनाल करा हुए आ ता ऊपर कैप हेले रखा हुए। आ आपण को बहुत साधारण मु देखिछि लोक माने जेमती बुढ़ा लोक माने दांत रहुनी आजिकली आपण कड़ा पका दांत डेंचर हेले आसुची डेंचर हेले लगेई पारिबे किछि असुविधा नै। एबे इम्प्लांट्स हेले आसी जाइछि जोडारे आमे खुंट जेमती गोटे पकई दउछु स्क्रू एंड दांत आम काड़िया हेले पड़बनी एबे टेक्नोलॉजी आउरी हाई हो जाइछि बुढ़ा लोक माने जानकर दांत नाही से माने हेले दांत प्रोस्थेटिक हिसाब रे लकेकी करि पारिबे। आ गोटे यंग टॉडलर्स माने यंग यूथ मानकू बहुत मु देखिछि दांत बेहड़ा अछि दे फील वेरी एस्थेटिकली तांको भलो लागुनी कि तांको सौंदर्य दरकार तो आमर क्लिप डिपार्टमेंट गोटे ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट जेमती अछि डेंटिस्ट्री रे तो सेडे कोन क्लिप दियंती क्लिप अछि आपण ब्रेसेस जो साधारण लैंग्वेज रे जानुचंती तापरे आमर इनविजिलाइन हले अछि आज बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आसी जाइछि जोटारे दांत बेहड़ा दांत को हेले आमे ठीक करि पारिबु। बट मोर सबु बेले गोटे जिंस मु कहिबी आपण को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो ठीक समय रे आपण आसंतु डेंटिस्ट पाखरे आसीबे निजर दांत देखेइबे दांतटा को स्वच्छ रखिबे भलरे परिष्कार परिच्छन करिकी रखिबे तो आपण को मेंटल ट्रॉमा होबनी इकोनॉमिकल ट्रॉमा होबनी आपण स्वस्थ रहिले आपण परिवार स्वस्थ रहिबो आपणकर पूरा परिवार स्वस्थ रहिले देश स्वस्थ रहिबो देश स्वस्थ रहिले संसार स्वस्थ रहिबो तो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। इवन आपण को मु कहिया पई चाहूची हमर ओरल हेल्थ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को सेलिब्रेट हुए से दिन आमर स्लोगन का सीएरा अछि हेल्दी माउथ रहिले हेल्दी बॉडी रहिबो। सो आमे समस्ते गोटे निष्पत्ति नबु कि वी शुड कीप आवर ओरल माउथ वेरी हेल्दी एंड देन ओनली आमर बॉडीटा हेल्दी रहिबो
पार्टीटा भल न रही जिते बैक्टेरिया कौन हम पार्टी शरीर भितर जीव एंड आम जगन्नाथ आमको एत सुंदर मनुष्य जीवन देइचंती शरीर मनुष्य जीवन थरेटे आम पाऊँ तो जीवनटा आम बहुत भलरे आमर शरीर को भलरे रखिले आमे ए दुनियाटा ए संसारटारे देखि पारिबु ठाकुर हेले जन्म नहीं एठे आमर कोठे जन्म नहीं ए संसार रे जन्म नहीं एक मृत्यु लोक रे जन्म नहीं से आमे निज शरीर को भलरे केयर करिबु आम पार्टीटा को केयर करिले सब जिनस भल रहिबो आमे निजे हसी पारिबु हसिले हेले समस्त 10 लोक को हसई पारिबु सेतिकी मु कहिया पई चाहूची आपण माने प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट किसी प्रश्न थिबो तो आपण मते पचारि पारिबे थैंक यू स्नेहा सतपति मैडम मते गोटे क्वेश्चन पचारचंते व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स दैट पीपल शुड नॉट इग्नोर The first very oral dental problem which is there in the which they ignore is usually when we are brushing our teeth you will always see that there is some bleeding is there you should know that you have some gum problems or when you have seen any black spot if there is there in your tooth you should immediately go and visit the dentist to get the restoration done that is the first thing आ गोटे प्रश्न मो पाखरे आछि कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट प्रभात किए पचारचंती मते फ्लोरिडेटेड पाखापाखी जेते हेले कमर्शियली अवेलेबल अछि आपणकर सबु टूथपेस्ट रे मैक्सिमम फ्लोराइड अछि आपण इवन देखिए कोलगेट रे अछि पेप्सोडेंट रे अछि अवेलेबल अछि आपण यू कैन यूज एनी बट मोस्ट इंपोर्टेंट आपणकर होछि ब्रशिंग टेक्निक टा मु आपन को गोटे लास्ट रे गोटे वीडियो देखै देबी किमती आपन ब्रश करिवे अभयासा लोचन मते क्वेश्चन पचारचंती हाउ ऑफन शुड वन विजिट द डेंटिस्ट फॉर चेकअप्स एंड हाउ कैन दीज विजिट्स हेल्प प्रिवेंट ओरल हेल्थ इश्यूज 6 मास को थरे आमे डेंटिस्ट पाखरे निश्चित जीवु दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड हाउ इट प्रिवेंट्स इन अ सेंस आपन किछि रोग थिबो आई एम जस्ट टेलिंग आजिकली आपन देखिबे अल्सर हेउची पार्टी रे कि किंबा कैविटी होउची आपन जानि परिबेनी ब्रश करथबे गोटे छोटो दाग थिबो आगे किछि तो नाही पेन तो नाही काहे कि डेंटिस्ट पाखरे जीबी जो छोटो कला दाग अछि इफ यू गो डाउन टू द डेंटिस्ट जो फिलिंग करिवे आपन देखिबे 2 to 3 मिलीमीटर डीप पड़ाए सेटा 2 to 3 मिलीमीटर डीप जो पड़ाउछु धीरे धीरे करिकी दैट विल गो डाउन टू द पल्प हमर तीनटा जो लेयर होउची वन इज एनामल वन इज डेंटिन एंड वन इज पल्प तो से जगह को पळेबो So that is the thing. This is the way you can prevent your oral health. Second, even if you have some ulcers, जे पानो गुटका हेले खांतीनी, sometimes ulcers can cause cancer also. Continuously आपन को ulcer होची, you are having continuous ulcers in your mouth. That is also a bad sign. It can lead to carcinoma. So आपन dentist पाखरे आसीबे, तो lot of prevention will be there. संभव स्वयं मते पचारचंती व्हाट आर द कॉज ऑफ गम ब्लीडिंग ही एडवाइज मी ब्रशिंग ट्वाइस ओके सॉफ्ट ब्रश ब्लीडिंग गम्स रो कारण होची वेरी सिंपल ब्लीडिंग गम्स जेबे हेले हुए इट्स ऑल अगेन बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपर्ली व्हेन यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ व्हाट विल हैपन द बैक्टीरिया कॉलोनी इंक्रीजेस दैट विल कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द gingiva the inflammation of the gingiva is there then it will cause bleeding. So you need to first get a oral prophylaxis or amar jo gote department achi jimti periodontics department oral prophylaxis karibe kimba apan you can go down to a general dentist also get a scaling done dant safa karaibe tapare apan bhalore dant brush karibe then that inflammation will go down definitely whatever he has asked for a not a soft brush exactly you can use a medium brush also but you have to brush twice daily. Listerine विषय के पचारचंती as a dentist Listerine is more like a mouth freshener rather than giving an antibacterial effect is not there much it is more of a mouth freshener you want for mouth freshener Listerine you can use but antibacterial effect तारो बेसी नहीं studies बेसी नहीं तारो you can use if you want.
पूजा मते पचारचंती what are your top tips for maintaining oral hygiene on daily basis? अच्छा, people are very busy. Yes, those who are आजिकाली लोक माने lifestyle disease बेसी हो जाए, but at least Pooja, I would like to tell you, just early morning when you get up, at least brush your teeth nicely. किछि आपण रातिरे, even if you don't want to brush your teeth when you're taking something sticky things, you have to brush it. If you don't brush it, at least take water in your mouth very nicely. You have to rinse it. If you would have seen people in the villages, they gargle and they just spit in a very big speed. So you have to do that so that in the gums your there will be lot of blood circulation, and that will keep your gums healthy. But how busy you are, you have to brush your teeth twice at least to keep it fine. PK Dev sir has asked me about how the elderly people should keep the teeth. Now, once the elderly people, the geriatric patients, what happens is usually there is attrition. Attrition in a sense कि आपनकर enamel dentin जो अछि enamel धीरे धीरे घोरी हो जाए. Definitely elderly जो geriatric patient अछंती, elderly patients अछंती, से माने टिके soft brush use करिवे. Definitely they have to also brush. कुली जिमती हेले करिवे. रातिरे गोटे माउथ वॉश, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करिवे किंबा दांत सिरसिर होतुबो. इफ देयर इज एनी सेंसिटिविटी, there is desensitizing mouthwash also which they can use. Flossing, another question they have asked me about flossing. Flossing आपण देखिथिबे तो दी दांत भितर फ्लॉस करे. Flossing is very important काहे कि खाद्य जिंस, what happens, food gets impacted between the gums. Gums भितरे आपनकर food रही गले, we cannot remove it by normal if you are taking just brush, we cannot remove it. So we have to use floss which is commercially available. Then only it removes. Sometimes those who are non-veg eaters, if you would be eating mutton and all those, it gets stuck, or the sticky food you are taking, any sticky food, burgers you are taking or breads you are taking, it gets stuck. So if you use a floss, you will have a healthy gums. That is very important. Diet, another thing, Sunanda ji has asked me about diet. Yes, diet does affect your oral health. Especially I would like to, the young generation, they just love taking Coca-Cola, they just love taking thumbs up. Please, what happens, I'll just tell you, if you are taking too much acidic food or too much of carbonated food, it causes your enamel will definitely, there will be demineralization of your enamel. So please avoid fast food, please avoid carbonated food and any sticky food. If you are taking sticky food, I do not say you should not take chocolates. You can take chocolates, definitely. But after taking chocolates, make sure you clean it. If you are able to clean it, no problem, even if you are taking chocolate. But carbonated things, I would not advise you. Plaque treatment, someone has asked me about, Ashish has asked me about plaque treatment. See, basic thing is, if you are not brushing your teeth, what is plaque is nothing but bacterial colony. Bacteria, what will happen to the bacteria? The bacteria will start growing. You are not brushing your teeth, you are not keeping it clean, the bacteria grows and that leads to plaque. So you have to use a good toothpaste, any commercial available toothpaste, you can use it, and you can brush your teeth. Brush your teeth, use a good mouthwash. If you are having a lot of plaque accumulation is there, use a good antibacterial mouthwash you can use. Sandeep has asked how many times we need to change, we need to change our brush. Now, if you have seen your brush, there's a bristles are there. If it turns, it's like around 3 to 4 months, usually the brush, it just erodes. It's just the bristles is bends. If the bristles bends, you have to just change your brush. It's not once or twice a month which Sandeep has asked. It is when your toothbrush, the bristles gets, it just turns like, it is like you can feel it, that it is not, it's like not 1 month you just throw the brush. No, the bristles, if it bends, you have to change your brush. Someone has asked me about enamel and does hot and cold decay enamel. It's not about hot and cold, something if you take something very hot and immediately cold. It's not hot and cold which there leads to decay of enamel. Enamel gets decayed
if you are not taking, if you're taking any carbonated, your food habits, main has your food habits, if there is lot of bacteria in your mouth, what will happen? That will lead to demineralization of the enamel. Enamel is the hardest part in the body. It's more hard than the bone also. But what will happen? That enamel, if you're taking any acidic thing, there will be demineralization of it. Tea and coffee does not exact weaken your teeth, but it causes definitely, it will cause staining of your teeth. Stains will be there. If there is stains, you can just get it cleaned by scaling. Janardhan Pati has asked about the symptoms of oral cancer and how do I know about it? A very good question, Mr. Pati. You have asked this question about oral cancer, and in Odisha especially, the oral cancer is a menace, I would say. ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାନ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଗୁଟକା ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, so be very careful, do not take any tobacco, first thing. Second is your immunity is also very, very important. Who is not taking tobacco also get cancer. You can have buccal mucosa cancer, you can have tongue cancer. So ulcer is another menace which you should get. So what is important? You should keep yourself very healthy. Nijoku health is very important. Keep yourself healthy by doing yoga, doing some activity has to be there, and your immunity has to be good so that you do not have cancer. And if you get it by chance, there are treatments are there, you will get treated. So nothing to worry about. Keep yourself very happy. Always keep on smiling. When you smile, your immunity will be excellent. Someone is asking me about a traditional way of brushing teeth is healthy. Okay, traditional way of brushing teeth, traditional in a sense, କହିପାରିବି କି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ କାଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, that is traditional. ନିମ୍ବ ଦାନ୍ତ କାଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି maximum. ନିମ୍ବ is very good antibacterial ହିସାବରେ, but ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଗାଁରେ ଆପଣ ଗଲେ what you will see, people are chewing that twig for a prolonged time. But nimbo as such, taro raso jo hochi, it has an antibacterial effect. Neem is very good for your mouth and antibacterial effect is good. If you can use the neem twigs nicely, there is absolutely no problem. But what happens? You brush it in such a way कि आपनो gums माने टिके abrade हो जाए. And I will एबे last रे मु कहिया पई चाहूची, thank you so much समस्ते भलो question पचारले, but मु आपन को खाली एटा कहिया पई चाहिबी कि you can maintain your oral health very very nicely. आपन किछि हेले असुविधा हबनी, दांत भलरे ब्रश करंतु, 6 मासुकु थरे दांत डाक्टर पाखरे आसीकी निज दांत को देखैबे. आपन को ना कर्कट रोग हबो ना दांत कैविटी म्हणजे जंत्रणा हेले बेसी हबनी, छोटो कैविटी हेतिबो, फिलिंग हेले हेजिबो. बट जेते आपन दूर रे 6 मंथ्स को थरे खाली कंसल्टेशन फीस देकी आपन गोटे निज को निज बॉडी चेकअप को दांत पार्टीटा भलो रहिले आपनकर देह हेले भलो रहिबो. तो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो समस्ते आसंतु कलिंगा इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंटल साइंसेस रे आसंतु. आमर 9टा विभाग अछि, सबु विभाग रे विभिन्न प्रकार काम अछि, सुपर स्पेशलिटी यूनिट अछि. आसिकी सेडे आपण निजर दांत हेले हमकु देखै पारिबे. वी आर एट योर सर्विस. आ किछि जहा क्वेश्चन थिबो आपण पछरे हेले मते पचारि पारिबे. एंड बिफोर आई एंड मु दीटा खाली गोटे वीडियो ब्रशिंग टेक्निक बहुत लोक मते पचार चंती, सेडा मु खाली टेक्निकल टीम को खाली कहिबी सेडा टिके प्ले कर दवा पई.
हुए आ फ्लॉस करा हुए केमिति आपणकर दांतटा भलरे रखी पारिबे ब्रशिंग टेक्निक ब्रश न कले एरा छोट गोटे फोटो आपण देखि पारुथुबे गोटे छोट कैविटी हे जाइछि सो आपण कैविटी न हबा पई गोटे हेल्दी दांत रखिया पई केमिति ब्रश करिवे ब्रश रे आमे टिके नबु एंड देन वी विल डू अ फ्लॉसिंग ट्वाइस ब्रशिंग अछि एरा ब्रश नेकी गोटे पेस्ट नबु पेस्ट नेकी तापर फ्लॉसिंग हेले करिवु फ्लॉस करवा टेक्निक के पचार सेटा आपण देखि पारिबे केमती आमे फ्लॉसिंग करूचु एडारे दांत मझिरे फ्लॉसटा पकेकी आमे फ्लॉसिंग करूचु माउथ वॉश यूज करा हुए एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट पाई थैंक यू